गुड आफ्टरनून एवरीवन। ITITS सेक्टर स्किल काउंसिल NASSCOM के फेसबुक लाइव वेबिनार में जुड़ने के लिए आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम मैं ये आशा करता हूँ आप सब लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। My name is Ankit and I will be the host for this session. SSC NASSCOM, Sector Skill Council NASSCOM, is the standard skill setting body for IT skills, and it builds competency for their assessments and certification. Under the aegis of NSDC and Ministry of Skills, we have developed multiple job roles across which the training and the assessments are being organized. जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, पूरी दुनिया और हमारा देश भारत इस समय कोरोना जैसी एक महामारी से अद्भुत जंग लड़ रहा है। COVID-19 has changed our entire journey and the lives from the physical to virtual. To ensure that in this difficult time our learning doesn't get stopped, Sector Skill Council NASSCOM has built and bring to your free series of broadcasts on the generic NOS related to IT/ITS Sector Skill Council. Today's virtual masterclass focuses on topic manage your work to meet requirement. अपने ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने काम का प्रबंधन कैसे करें, ये आज हमारे चर्चा का विषय है। Before we begin, let me explain how you can talk to us in this webinar. In case you have any question to ask, आप Facebook लाइव स्ट्रीमिंग के कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। We will try to address as many as question we can. After 45 minutes of presentation, there will be 15 minutes dedicated for question and answer. Now, it's my pleasure to introduce you to our master trainer, Mr. Rohit Sharma, who will be leading today's session. With over 18 years of experience in the field of training and people development, Rohit has been instrumental in transforming the lives of countless students as well as professionals. He specializes in soft skills as well as competency-based skill training in the field of vocational education. इन्होंने पिछले 4 सालों में तकरीबन 100 से ज़्यादा ऐसी ट्रेनिंग्स कंडक्ट की हैं। To all our participants, just to apprise you, after this session, we will be running quiz and contest on our social media channels. So be attentive and listen to the session very carefully to win the exciting prizes. Now it's turn to hand over the mic to Rohit. Rohit, over to you. Great, thank you very much, Ankit. Thanks a lot for the wonderful introduction. And thank you, SSC NASSCOM, for 3 things. Number 1, for coming up with this amazing initiative. Secondly, for coming up with this opportunity where people from pan-India, they can connect with each other. And thirdly, for giving me the opportunity, rather, I would say the responsibility to connect with the students, with the aspiring trainers, with the trainers, with the master trainers associated with the IT/ITS sector from pan-India, with whom I can share some gems of wisdom and gems of success, which can help people grow and develop, not only in their career, but also in their life. And a big, big hello and a warm welcome to all our viewers who have joined us from pan-India, not only for us, but for themselves as well. Thank you very much for taking our time for yourself today. Great. Yes, it has been a tough time for all of us. We were not expecting this kind of life or lifestyle rather. लेकिन किसी ने सच कहा है कि प्रॉब्लम्स कभी दरवाजा नॉक करके नहीं आती, वो तो बस हमारी लाइफ में घुस जाती हैं। कभी हम प्रिपेयर्ड होते हैं, कभी हम प्रिपेयर्ड नहीं होते, और जब हम प्रिपेयर्ड नहीं होते और प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं, दैट इज वेयर द रियल लर्निंग इज हिडन।
ऐसा लग रहा था जैसे हम एक समुद्र में जा रहे थे, हम एक अपने मुकाम की तरफ बढ़ रहे थे। वी वर क्रूजिंग टुवर्ड्स अ डेस्टिनेशन और वी वर एंजॉयिंग द मोमेंट्स, रिलिशिंग द मोमेंट्स, और किसी ने हमें एकदम से पीछे से धक्का दे दिया और हम समुद्र में कूद गए, गिर गए। इससे मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया है ऑन अ लाइटर नोट कि कहा जाता है एक स्विमिंग पूल था जिसकी डेप्थ कहीं 20 फीट से ज्यादा थी। उसके आसपास लोग खड़े हुए थे जो शायद उसका मुआयना कर रहे थे। अचानक उसमें एक आदमी कूद जाता है और जैसे तैसे करके वो बाहर आता है और लोग तालियां बजाने लग जाते हैं, उनकी प्रशंसा करने लग जाते हैं, दैट ब्रावो, वेल डन, अमेजिंग, फैंटास्टिक। तो उस आदमी ने सबको रोका और बोला कि रुक जाओ, तालियां बाद में बजाना, पहले ये बताओ कि मुझे धक्का किसने लगाया था। So yes, ladies and gentlemen, it feels as if we've been thrown into an ocean, maybe on a different planet. और जैसा कि मैंने कहा कि प्रॉब्लम्स कभी दरवाजा नॉक करके नहीं आती। इस महामारी के दौरान बहुत प्रॉब्लम्स आई, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल लॉस हुआ, और कुछ ऐसा लॉस भी हुआ जो इररिप्लेसेबल है, इररिपेयरेबल है। यस, पर जो तर गया वो बढ़ गया और जो रुक गया वो रह गया। जैसे उस इंसान की तरह जो स्विमिंग पूल में गिर गया था लेकिन वो जैसे तैसे बाहर आया। इस महामारी के दौरान बहुत लर्निंग हुई, बहुत लर्निंग हुई। देखिए, जब भी कोई सिचुएशन आती है, लाइफ हमारे पास सिचुएशन फेंकती है, उसमें कुछ लोग प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान देते हैं और कुछ लोग अपॉर्चुनिटीज की तरफ। जो ऑर्डिनरी पर्सन है उसको प्रॉब्लम्स दिखेंगी और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है उसको अपॉर्चुनिटी। जैसे कि आपने देखा होगा फॉर्मूला 1 रेस, आप में से काफी लोगों ने देखी होगी, सुनी होगी, कितनी तेज रफ्तार से गाड़ियां चल रही होती हैं, रेस चल रही होती है, बट हर एक ड्राइवर को 1 से लेके 4 पिट स्टॉप्स पे रुकना पड़ता है। अब रुकना अनिवार्य है। लोगों को लगता है कि ये तो पीछे रह गया, पर वो रुकता इसलिए है बिकॉज उसकी गाड़ी के टायर्स चेंज हो रहे होते हैं, उसके इंजन का ओवरहॉलिंग हो रहा होता है, पूरी गाड़ी की मरम्मत करी जाती है, बिकॉज दैट ड्राइवर इज preparing himself for a bigger, better, bolder, brighter and a brilliant journey. तो कभी कभी लाइफ में ऐसे मुकाम आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ रुक गया। वहां पे टाइम मिलता है एक इंट्रोस्पेक्शन, अपने अंदर देखने का कि अब मैं और क्या कर सकता हूँ। इस महामारी के दौरान हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। कुछ 3 अहम मुद्दे हमें सामने दिख रहे हैं। पहला ये कि अब आने वाले समय में, जिसको लोग कह रहे हैं एक नया लाइफस्टाइल अपनाना है, इट विल बी अ न्यू नॉर्मल। अब हमें ये देखना है कि अब हम कैसे अपना कार्य मैनेज कर पाएंगे। दूसरा, हम लोगों के साथ तालमेल कैसे बना पाएंगे, कैसे वी विल वर्क इफेक्टिवली विद पीपल। और तीसरा, कि अपने हेल्थ, सिक्योरिटी और सेफ्टी का कैसे ध्यान रखें। सो इन 3 टॉपिक्स को ध्यान में रख के, लेडीज एंड जेंटलमैन, NASSCOM has come up with a live broadcast session which will be divided into 3 days. 3 दिन 3 टॉपिक, डिफरेंट और बहुत ही अहम टॉपिक, जिसके लिए ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर पर्सन की लाइफ में काम आएंगे। हर पर्सन, डजंट मैटर आप किस जॉब रोल में हो, आप क्या काम कर रहे हो, ये चीजें आपके लिए बहुत बहुत मायने रखेगी अगर आप ग्रोथ और डेवलपमेंट चाह रहे हो। कभी कभी हम छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं, पर वही बहुत बड़ी अहमियत रखती है हमारी लाइफ में। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये 3 दिन का लाइव सेशन चलेगा, 3 से 4, 3 बजे से लेकर 4 बजे तक, टुडे, टुमारो एंड ओवरमॉरो। ये 3 टॉपिक हैं जो आपके सामने हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मैनेज योर वर्क टू मीट रिक्वायरमेंट्स। अब इस टॉपिक में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आई एम सुपर एक्साइटेड टू जंप इनटू दिस टॉपिक नाउ एंड गेट कनेक्टेड विद ऑल ऑफ यू। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप में से कुछ लोगों के साथ काम कर चुका हूँ इन टर्म्स ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग, लेकिन मैंने भी बहुत कुछ सीखा है आप लोगों से। और जिन लोगों से मैं कनेक्ट नहीं हो पाया, आई एम श्योर आने वाले समय में हम एक दूसरे को थोड़ा सा और जान जाएंगे और कुछ एक साथ मिल के इस देश के लिए, आजकल के यूथ के लिए हम कुछ और कॉन्ट्रीब्यूशंस कर पाएंगे, जिसकी वजह से उनका डेवलपमेंट, उनकी ग्रोथ हो, उनकी लाइफ में, उनके करियर में। So let's get started. I'm super excited. Ankit ji has definitely told you already that keep your eyes and ears open. We'll be asking you certain questions in between. Let's see कि कौन पहले answer देता है. So keep your eyes and ears open. We want to make this session more informative, interesting, and interactive. 3 eyes: informative, interesting, and interactive. So let's get started. Here's the topic for today. अभी आपके सामने एक
पिक्चर दिखेगी, लेट्स सी कि कौन उसका जवाब दे सकता है कि ये क्या है, व्हाट इज दिस। आई एम श्योर कुछ लोग कह रहे होंगे दिस इज अ टेस्ट रिपोर्ट, दिस इज मेडिकल रिपोर्ट। या क्या लगता है ये क्या है? या दिस इज एन ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? ईसीजी, yes, okay, I'm sure you can give the answers in the comment section. Yeah, ECG stands for electrocardiogram. Electrocardiogram, yeah, it's a test. ECG is a test जो एक्चुअली हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का ध्यान रखता है। और आप देख रहे हैं कि ये कैसे चल रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। जैसे टाटा इंडस्ट्रीज के मालिक जो हैं मिस्टर रतन टाटा, उन्होंने कितना अच्छा इसका एक एनालॉजी दिया था और दिया है कि इसको हम एक लाइफ की तरह समझ सकते हैं। दिस इज द लाइफ लाइन। ये ऊपर नीचे चलता जा रहा है, ऐसे हमारी लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और जब तक ये आ रहे हैं तो अच्छा है, क्योंकि अ डेड लाइन मीन्स द पर्सन हैज डाइड, पर्सन खत्म है। सो लाइफ में अप डाउन आते रहते हैं, कहानियां खत्म नहीं होती। कल मैंने इस ग्राफ को थोड़ा सा जूम करके देखा, मुझे लगा इसमें कुछ लेटर्स छुपे हुए हैं, कुछ लेटर्स हैं ऐसे। वो लेटर्स क्या है? वो मुझे कुछ इस प्रकार दिखाई दिए। वीएमवी, कहीं ना कहीं वी बन रहा है, आप देख सकते हैं, कहीं पे एम बन रहा है, फिर वी बन रहा है, देन देयर इज एन एम ओवर हियर, वीएमवी। नाउ व्हाट इज दिस वीएमवी? जैसे एक इंसान के लिए एक लाइफलाइन, उसकी लाइफलाइन होती है, उसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एक लाइफलाइन होती है, और वो इस वीएमवी में छुपी हुई है, एक ऑर्गेनाइजेशन की लाइफलाइन। इस वीएमवी का फुल फॉर्म क्या है? विजन, मिशन एंड वैल्यूज। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर विजन क्लियर है कि मुझे ये हासिल करना है, मिशन क्या होता है कि हमें उस विजन को कैसे हासिल करना, और वैल्यूज हैं आपके मान, आपके एथिक्स, आपके प्रिंसिपल्स, कुछ ऐसे मूल्य जिन पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर ऑफिस जाना है टाइम पे तो जाना है, मुझे ये काम खत्म करना है तो करना है, राइट? यू आर कनेक्टेड विद द ऑर्गेनाइजेशन। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे हम ये वीएमवी एक ऑर्गेनाइजेशन की लाइफलाइन मान रहे हैं, वैसे ये वीएमवी आपके करियर की भी लाइफलाइन। वीएमवी, आपकी भी लाइफ में एक विजन होना चाहिए, दैट व्हाट आई नीड टू डू, और उसको किस तरीके से पूरा करूंगा, वो है आपका मिशन। और अपनी वैल्यूज पे कभी कॉम्प्रोमाइज ना करें। कीप योर वैल्यूज इंटैक्ट, आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रखेंगे, आपकी नीड स्ट्रॉन्ग रखेंगे। वीएमवी, याद रखना इस चीज को, विजन, मिशन, वैल्यूज। ये जब तक हैं तब तक आप चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, कीप मूविंग फॉरवर्ड। अब यहां से अब हम आगे बढ़ते हैं और अब ध्यान देते हैं, गेट इनटू द टेक्निकल थिंग्स ऑफ इट, कि हम ऑफिस में किन चीजों का हमें ध्यान रखना है अगर कोई हमें कार्य पूरा करना है, कोई भी। देखिए, मैं एक चीज आपको और क्लियर करना चाहता हूं कि व्हाटएवर वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, ट्राई टू अप्लाई दैट इन योर लाइफ ऑल्सो। एक करियर और दूसरा लाइफ। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली आपको बताया जा रहा है, बट ट्राई टू अप्लाई दैट इन योर लाइफ ऑल्सो, बिकॉज एक प्रोफेशनल लाइफ होती है, एक पर्सनल लाइफ होती है, वी हैव टू मेंटेन बोथ। सो लेट्स हैव अ लुक एट हाउ कैन वी मैनेज आवर वर्क। तीन चीजें के याद रखिए, तीन चीजें ध्यान में आप रखिए, और ये होनी चाहिए इफ यू वांट टू अचीव एनीथिंग, इफ यू वांट टू मैनेज योर वर्क। रिक्वायरमेंट्स, पीपल एंड रिसोर्सेज, आरपीआर। रिक्वायरमेंट्स, पीपल एंड रिसोर्सेज। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं इसी ब्रॉडकास्ट सेशन का। रिक्वायरमेंट्स मुझे पता होनी चाहिए थी इसकी, कि इसमें किस टाइम पे मुझे ये सेशन लेना है, और कितने टॉपिक्स कवर करने हैं, और किस तरीके से प्रेजेंट करना है, उसका जो क्वालिटी है वो कैसी होनी चाहिए। दैट्स रिक्वायरमेंट्स। सेकंड इज द पीपल, किन को मुझे ट्रेनिंग देनी है, किन के साथ मुझे डील करना है। आर दे स्टूडेंट्स, आर दे एस्पायरिंग ट्रेनर्स, आर दे ट्रेनर्स और मास्टर ट्रेनर्स, राइट? तो वो पता होना चाहिए। और रिसोर्सेज क्या है, मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, मुझे क्या क्या, मेरा मटेरियल क्या है जो मुझे पढ़ाना है, स्टडी मटेरियल क्या है मेरे पास, और टूल्स कौन से यूज करूंगा मैं। विल इट बी ऑन फेसबुक लाइव जैसे कि हो रहा है, तो इसका एक्सेस होना चाहिए। नाउ हैव अ लुक एट सर्टेन थिंग्स फ्रॉम द ऑफिस पर्सपेक्टिव। आपको ये पता होना चाहिए कि सिर्फ ये टाइम, इट्स नॉट ओनली अबाउट टाइम कि किस समय मुझे ऑफिस पहुंचना है। इस टाइम का मतलब ये भी है कि आपको किस समय कौन सा काम करना है और कितने समय में करना है। क्वांटिटी पता होनी चाहिए कि कितनी मेल्स भेजनी है, कितने मेरे कस्टमर्स के साथ आज कॉल है, कितनी मीटिंग्स में मुझे जाना है, कितने ड्राफ्ट्स क्रिएट करने हैं, ये सब पता होना चाहिए। और क्वालिटी, आपकी एक्यूरेसी सर्वोत्तम होनी चाहिए। यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी, बिकॉज अगर आप कोई चीज एक्यूरेटली नहीं करेंगे, आपको तो वो दोबारा करना पड़ेगा। नाउ व्हेन यू आर इन द ऑफिस, यू हैव टू डील विद पीपल आल्सो। कभी कभी आपके मैनेजर्स, लाइन मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स,
समटाइम्स यू हैव टू डील विद योर कलीग्स, आपके जो सहकर्मी हैं उनके साथ आपको मिलके काम करना है। और डिपार्टमेंट्स का मतलब ये है जो हमारे इंटरनल डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑफिस में, एचआर डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट होता है, यू हैव टू डील विद देम आल्सो समटाइम्स, तो इसका आपको ध्यान होना चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, द रिसोर्सेज। आपको पता होना चाहिए आप कौन से वर्क स्टेशन पे बैठे हैं, वहाँ पे इंफॉर्मेशन है आपके पास या नहीं है, कौन से टूल्स आप यूज़ कर रहे हैं, रीडिंग मटेरियल कौन सा है आपके, अगर कस्टमर कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप उसका एकदम से आंसर दे सकते हैं, कुछ रेडी रेकनर्स होते हैं वो रखने चाहिए, कौन सी एप्लीकेशंस आप यूज़ कर रहे हैं अपने सिस्टम पे, उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। सो ये 3 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए आपके पास, किसी भी फील्ड में हैं आप, आपको RPR का ध्यान रखना है, रिक्वायरमेंट्स, पीपल एंड रिसोर्सेज, ये 3 चीज़ें हैं, इसमें से एक में भी कमी है हमारा काम मैनेज होने में प्रॉब्लम आएगी। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं कि अगर हमें ऑफिस में अच्छे से मैनेज करना है अपना काम तो हमें पॉलिसीज पता होनी चाहिए। 2 तरीके की पॉलिसीज होती हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल जो हमें ऑफिस के साथ जोड़ती हैं, एक्सटर्नल वो जो हमें कस्टमर्स के साथ जोड़ती हैं। Internal policies can be your attendance policy, your leave policy, your dress code policy, your harassment policy. तो इस चीज़ का हमें ज्ञात होना चाहिए और हमें इसको निरंतर फॉलो करना है। यानी you need to stay connected with the organization. आप अपनी 1/3 जो दिन है आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में दे रहे हैं, so get connected with that. यहाँ पे मैं 3C चीज़ों के बारे में बोलूँगा, 3C. One is connectivity. Second is the commitment, and the third one is the consistency. Connectivity होनी बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो कंपनी का गोल है वही आपका गोल हो जाता है। दूसरा, कमिटमेंट दीजिए अपनी, जैसे आप अपनी लाइफ में कमिटमेंट देते हैं अपने पार्टनर को, लाइफ पार्टनर को, अपने पेरेंट्स को कमिटमेंट देते हैं, उसी तरीके से ऑफिस को भी अपना समझ के काम कीजिए। आपकी ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता। यू थिंक दैट दिस इज योर ऑफिस। And third, you have to be consistent, regular, consistent with connectivity and with your commitments. So policies का ध्यान रखिए। एक्सटर्नल पॉलिसीज वो होती हैं कि कस्टमर के साथ कैसे डील करना है। कस्टमर का अगर फोन रिपेयर होना है तो आप उसको कितना टाइम देंगे, टर्न अराउंड टाइम जिसको हम कहते हैं, कितना देंगे, इज इट 72 आवर्स, 48 आवर्स? यू हैव टू बी क्लियर विद दैट, यू हैव टू फॉलो द पॉलिसीज। अपार्ट फ्रॉम दैट, अच्छा होता है कि ऑफिस में जाते ही हम एक लिस्ट बना लें कि मुझे कौन कौन से कार्य करने, कौन कौन से मुझे कार्य करने हैं, ये पता होना बहुत ज़रूरी होता है। और जब आप उस पर टिक मार्क करते हुए एक सेंस ऑफ प्राइड, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट लगता है कि मैंने ये काम पूरा कर लिया। एक बहुत सॉर्टेड पर्सन होता है जो एक लिस्ट बनाता है, जैसे आप ग्रोसरीज खरीदने जाते हैं तो भी लिस्ट बना के जाते हैं, तो व्हाई नॉट डू दैट इन द ऑफिस आल्सो। और जब आपने लिस्ट बना ली तो अगेन द स्टोरी डजंट एंड देयर, वहां से हमें प्राथमिकता देनी होती है कि कौन से कार्य को मुझे पहले करना, कौन सा अर्जेंट है कार्य जिसको मैं पहले करूं, और फिर उसके हिसाब से आप अपने कार्य को प्राथमिकता दीजिए, जितने भी कार्य हैं। सो बेसिकली यू हैव टू मैनेज ऑल द वर्क इन द गिवन टाइम। जैसे कि हमें ये सेशन मैनेज करना है इन गिवन टाइम, कहा जाता है टाइम मैनेजमेंट, बट टाइम मैनेजमेंट इट्स इनकम्प्लीट। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज मैनेजिंग योर वर्क इन द गिवन टाइम। हम टाइम को कभी मैनेज नहीं कर सकते हैं, उसको रोक नहीं सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, but what we can do is we can manage our work in the given time. इसके बारे में और चर्चा करेंगे आगे बढ़ते हैं। जो भी कार्य आपने करना है वो एक्यूरेटली करना है, एक्यूरेटली। दोबारा उसमें गलतियों का कोई स्कोप नहीं है, दोबारा रीवर्क करने से टाइम ही वेस्ट होता है। जो भी कार्य कर रहे हैं कॉन्फिडेंशियल रखिए, ऑफिस की बात ऑफिस तक, घर की बात घर तक। राइट, डोंट मिक्स टू लाइव्स। आपके पास कंपनी का डेटा है, इट शुड नॉट गो आउट, प्लीज, दैट्स अगेंस्ट द वैल्यूज ऑफ योर ऑफिस पॉलिसीज। whatever you're working, जिस भी टास्क पे आप काम कर रहे हैं, that is confidential, it should not be shared with the outsiders. Please make a note of that. और कभी भी दुविधा हो तो एक्सपर्ट से जरूर पूछिए, उनको अच्छा लगता है। हमें कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स को, नए यूथ को ऐसा लगता है, वैसे शेयर करते हैं कुछ लोग कि सर मैं अपने बॉस के पास जाऊंगा तो वो बुरा ना मान जाए कि तुम्हें ये नहीं आता। सही, देखिए, एक एक्सपर्ट को बहुत अच्छा लगता है जब उससे कोई पूछता है। डॉक्टर्स किस लिए होते हैं भाई, उनको उनके पास जाना चाहिए, वी आर नॉट एक्सपर्ट, सो वी रीच आउट टू द डॉक्टर एंड ही फील्स गुड दैट या यू हैव ट्रस्ट इन मी, सो आई कैन गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन। सो आप एक्सपर्ट अपने मैनेजर्स से जरूर पूछिए कि जब आपको दुविधा हो।
एंड अपने वर्क एरिया को साफ रखना ये हमारी जिम्मेदारी है, अब तो रखना ही पड़ेगा ध्यान इस सिचुएशन में। बट एज मैडम मदर टेरेसा सेड कि जो क्लीनिनेस है, इट स्टार्ट्स विद योर डोरमैट। आपके डोरमैट से शुरू होती है स्वच्छता। देखिए, आप कहीं पे भी जाते हैं, यू रिप्रेजेंट थ्री थिंग्स, आई कॉल इट लाइक थ्री पीस। सबसे पहले आपसे पता लगता है आपकी पेरेंटिंग का, यानी आपके पेरेंट्स का पता लगता है। दूसरे चीज का पता लगता है आपकी वर्क प्लेस का, कि आप कहाँ पे काम करते हैं, दैट इज अगेन अ प्लेस, पी फॉर प्लेस। एंड द थर्ड वन इज ऑल्सो अ प्लेस, बट दैट इज योर बर्थ प्लेस। आपसे आपके राज्य का, आपके शहर का, आपकी सिटी का, आपकी स्टेट का, आपकी कंट्री का पता चलता है, वेर एवर यू गो। सो जहां भी आप काम कर रहे हैं, मेक श्योर यू रिप्रेजेंटिंग योर पेरेंट्स ऑल्सो। अगर साफ सफाई नहीं रख रहे हैं, it looks very shabby. It looks very shabby. It talks more about you. It doesn't talk anything about your workstation. It doesn't talk about your desk. It talks about you as an individual, that how sorted, how organized you are. So please make sure that you have to keep your work area clean. We're going to talk more about that now. अपना जो वर्क एरिया है इसको कैसे हमें क्लीन रखना चाहिए, मतलब और भी बहुत चीजें हैं, सिर्फ क्लीनिनेस नहीं है, और भी चीजें हैं। इसको थोड़ा सा और आगे समझते हैं कि ऑफिस में वर्क अगर करना है, इफेक्टिवली वर्क करना है, तो किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे 5 पिलर्स ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट। ये दोनों तरफ से है, ऑफिस की तरफ से भी और एक एम्प्लॉय की तरफ से भी, राइट। प्लीज ध्यान दीजिए, अगर आप एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना चाहते हैं, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन भी एक अच्छा एम्प्लॉय ही चाहती है। और अच्छे एम्प्लॉय की डेफिनेशन क्या है कि उसमें स्किल्स भी हो और उसका बिहेवियर भी अच्छा हो। स्किल्स एंड बिहेवियर, ये दोनों बहुत जरूरी है एक इंसान में, उसकी ग्रोथ के लिए ये दो कंपोनेंट्स होना बहुत जरूरी है, स्किल्स एंड बिहेवियर। तो यहाँ पे थोड़ा नजर डालते हैं कि 5 पिलर्स कौन से हैं ऑफिस मैनेज करने के लिए, या फिर अपने कार्य को मैनेज करने के लिए व्हाइल सिटिंग इन द ऑफिस। द फर्स्ट वन इज द सॉर्ट पिलर। इसके बारे में और डिटेल्स में हम जाएंगे। वी हैव टू कीप द थिंग्स इन ऑर्डर। शाइन, क्लीननेस की बात हम कर चुके हैं। स्टैंडर्डाइज रखना है चीजों को, एंड सस्टेन। अब ये क्या क्या है ये पिलर्स, थोड़ा सा इसके बारे में और चर्चा करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। सो पहला है सॉर्ट पिलर। सॉर्ट पिलर है, बहुत जान होती है एक पिलर में, और हो सकता है कि अगर आप ये सारी चीजें करें तो आप एक खुद में ही एक पिलर बन जाए अपने ऑफिस के लिए। पहला है सॉर्ट। आपका जो वर्क स्टेशन है वो सॉर्टेड होना चाहिए, वहां पे सिर्फ जरूरत की चीजें हो, अननेसेसरी चीजें नहीं होनी चाहिए, उनको निकाल दीजिए। देखता हूं मैं कुछ ट्रेनर्स होते हैं जो पुराने मार्कर्स भी रखते हैं अपने डेस्क पे जो चल नहीं रहे, निकाल दीजिए। अगेन इट टॉक्स मोर अबाउट यू। सो अपने वर्क स्टेशन पे उन्हीं चीजों का रखिए, उन्हीं चीजों को रखिए जो आपके काम में आती है। एंड द सेम अप्लाइज एट होम आल्सो। द नेक्स्ट वन इज set in order. Set in order. Set in order का मतलब क्या है? Set in order is when you keep a place for all the required things. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ, you must have seen, you must have gone to what you call a chemist shop. You must have seen that in the chemist shop, that when you go over there, the person, the helper over there who's supporting the entrepreneur, the man, the owner of that shop, they are helping. Well, they are not that knowledgeable, they are not that competent, still they are able to find those medicines. How? Because they have kept the medicine in the alphabetically order. जो A वाली medicines है, they have kept it one side. The medicines that the names जिनके शुरू होते हैं with B, they have kept it on the other rack. So you have to keep that in order. That talks more about you, how organized you are, right? It also saves time. It also helps you reducing the stress level, right? If the things are haywire, kept here and there, and they are not kept organized in an organized manner, you will feel stressed. You will be running short of time, right? So make sure that you have the things in order. Apne office mein, you have a separate rack for your files. You have separate rack for your stationery, and in those files also keep separate files for the customers, for the clients, for the managers, for your one-on-one. Everything has to be kept separately. Then the next one is, the next pillar rather, is shine. We've talked about that. See, we are not suggesting you ki aap, when you have your coffee or tea,
I've seen a lot of people keeping the coffee mugs at their workstation itself. Well, that is again not right. I mean, at home we don't behave like that. What we are not expecting you to wash that mug also. We are not expecting that. But what you should do is at least keep it back in the pantry or maybe in the kitchen somewhere. Yes, if you don't want to clean it, then that's okay. But then make sure that when you leave your workstation, those coffee mugs and those rough papers, they are kept aside, maybe thrown in the bin. If those are paper cups, they have to be thrown in the bin, in the dustbin. Don't let it stay on your workstation. It talks more about you. It doesn't talk anything about that workstation. It's you. See, you are working, you are spending like 10 hours or 8 to 10 hours, one third of your day at a place. Do you think that you'll get positivity when you're sitting next to a dustbin or a place? Do you want to spend your one third of your day at a place that is stinking? Well, I don't want to do that. So I will keep my area neat and clean and keep only those things which are essential and keep them in an organized manner. तभी मजा आता है लाइफ का because you're giving like one third of your life in the office. So make sure that you are managing it effectively. Then the fourth pillar is standardized. Standardized होना चाहिए. ये office की तरफ से भी जाता है. This comes from the office standpoint also. A lot of times it happens that the system on which I'm working, it stops working. I mean, the application is not running. Maybe some virus has attacked my PC, due to which one of the software has stopped working. If I have a spare workstation which has similar tools, similar applications, again, that will help me save time. It will help me reduce my stress level. I can quickly move to the other workstation, which is equipped with all these tools, these applications, the technology. So the standardization has to be there. The same keyboard, the same functionality should be the same. That's where we drive the parity, right? The uniformity in the office, and everything is connected to time and stress. If you manage these things, you'll be able to manage your stress levels also, and you'll be able to manage the work within the given timelines. And the last but not the least over here, the fifth pillar of office management is sustain. Everything boils down to one thing, that is sustainability, that is the consistency, maintenance. Whatever we have learned, sorting, set in order, shine, standardize, now we have to sustain these things. We have to make sure that we are shining our workstation, we're keeping things in order, we're keeping things sorted, and we have standardized tools. We have to maintain that day in, day out, just like sun ukta hai, rises and sets. Consistency is there. It's really important. Everything boils down to consistency. Remember that 3C, you need to be connected with an organization, you have to be committed with the organization, and you have to be consistent, regular. Do the same thing again and again. That's where the growth and development is hiding. You have to unleash that. Be consistent in the good things that you're doing, right? Now, that's about the office management. How do you manage your work? See, you manage your behavior. हमारे office में appraisals होते हैं, a performance evaluation is done. It is not done only on your results. It is also done on your behavior part. After results and behavior, these are the two tires of bicycle. Tires of bicycle, two tires. Skills होने जरूरी हैं. Skills is something which will get you the job, your technical skills. But behavior is something which will take you on top. So make sure that you are connected with the organization from end to end, right from the beginning till the end of the day, right? Don't forget, you're representing your parents, you're representing your workplace, you're representing your birthplace as well. People are going to talk about that, that person is from Delhi. Somebody called us, they connected us through a broadcast. Somebody from Delhi joined from SSE NASCOM, right? So that's where, the things are remembered the most. 5 years down the line, you might forget my name, but then you will not forget, you will always remember that the session was conducted by SSE NASCOM, and, the person was sitting somewhere from Delhi, NCR.
So I'm representing right now, I'm representing the organization as well as the place from where I'm residing. And also I'm representing my parenting. The way I'm talking, the way I'm addressing you, it really definitely really talks about my upbringing. So make sure you keep three things in mind whenever you're going, whenever you're working. But the story doesn't end here. We need to move forward and also take care of another thing, which is time, your office and time. It is really, really important. Now we have talked about the tools, the requirements, the people, the pillars. Now we are moving out the most critical element जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता वो है टाइम. टाइम, राइट? और उसी गिवन टाइम में हमें टास्क कैसे मैनेज करने हैं, ये जरा एक इस पे नजर डालते हैं और देखते हैं कि कैसे हो सकता है, कैसे करें. पहले इसको समझने से पहले खुद को समझना बहुत जरूरी है. इंट्रोस्पेक्शन, वी वर टॉकिंग अबाउट दैट. वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट, वी नीड टू सी विद इन आवरसेल्व्स दैट मेरे में क्या कमियां हैं. एंड प्लीज रिमेंबर, कमी होना इज नथिंग बिकॉज नो वन इज परफेक्ट. कमी होना इज नथिंग. अपनी कमी को जानना, knowing your weakness is something. Having a weakness is nothing, but knowing your weakness and realizing your weakness is something. But working on your weakness to make it converted into your strength is everything. Right? I repeat, having a weakness is nothing. Realizing that this is your weakness is something, but working on that weakness to convert it in your strength is everything. If you know your weakness, you realize that that's your weakness, why aren't you working on it then? Now, what is that weakness? Let's talk about that. Let's look at some portraits, some characteristics of people. ये सभी में होते हैं. कभी कभी मेरे में भी ऐसा एलिमेंट आ जाता है कि मुझे पता है मुझे क्या करना. I know what I have to do, what I have to do in life, what do I have to do today. I know that. But over a period of time, they forget, and they at the end of the day, when they are hitting the bed, when they're going to sleep, they realize that, oh my God, I forgot this. I should have. How can I forget this? Or you're not a machine. You're a human. As per the experts, on an average, more than 60,000 thoughts, they enter our mind. Some of them are repetitions, of course. These are not new thoughts, but the repetition of the same thought. So the first category is people are like really stuck. I would say they are lethargic. They just want to keep everything in mind. Why do we have a calendar? Tell me, why do we have a calendar then? Do you know what was the day on 23rd of January? Or maybe 16th of May? Yeah, if it was a special day for you, then you would remember what day it was. But then usually we look at the calendar. That's exactly what we have to do in the office. If you really want to manage your work, make a to-do list. Make a to-do list that will really help you. और जैसे मैं कह रहा था, जब आप इस पे टिक मार्क लगाते हैं, that I've done this, I have done this, I have done this also. That's a sense of pride, a sense of achievement that you will get. You know, I'm sure people will relate to it. जब आप resume बनाते हैं अपना, तो आप जब उसमें लिखते हैं, I have been awarded with this, the Employee of the Month award, I am a certified trainer. You know, when you put that in bullet points, you are getting that sense of pride with it. Now, that's exactly what you need to do. Every day is like a war. For you, every day is a new day, new challenges, new opportunities. And you get a new day to perform in a new way. A new day is given to us so that we can live our day better than yesterday. So start making a to-do list. It really helps. You will not be able to forget. You will never, ever forget that what do I have to do at 10 o'clock? What do I have to do at 11:30 in the morning? What do I have to do at 5 o'clock in the evening? You just have to open your notebook. That's it. And look at it, that this is what is coming up. Next category. आगे बढ़ते हैं. Then there are a lot of people who would say that, यार टाइम का पता ही नहीं चल रहा, टाइम पता नहीं कहाँ चला जाता है. I have no idea. अभी तो बैठे थे यार, अभी शाम हो गई. A lot of people talk like that, you know. I don't even know where the time is going. Some people say time is running, some people say time is flying. So what you have to do is, again, some kind of introspection, realization. Pick up a sheet of paper and make a time activity sheet as to where is your time going? Where is your time going? Let me give you an example of that. This is how a time activity sheet is created and maintained, but you have to be honest with this. कि सुबह 9 से 9:30 आपने क्या किया?
आपने ऑफिस में मेल्स चेक करी. So you better write it down, otherwise you'll forget it. You have to make a note of each and every second. If it is 9:27, then be it 9:27, don't make it 9:30, because every second counts, every minute counts. And then from 9:30 to 10:30, you might have gone for a meeting in the office. ऑफिस में मीटिंग के लिए गए हो, अब वहां पे क्या क्या हुआ उसका भी आपने नोट्स बनाए या नहीं बनाए. बट मीटिंग के बाद क्या होता है, लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, पीपल डोंट कम बैक टू देयर वर्क स्टेशन, दे टेक अ ब्रेक, and they take a break for gossiping, for chatting with each other, and God knows what do they gossip and what do they chat. Is that chatting, the discussion which is going on during the break time, is it connected with your goal, with your organization's goal? If the answer is no, then it's a wastage of time. It's okay to relax a little bit, but who says that gossiping and talking about others, talking about negativity about others is I don't think so. It's a time invested. It can never give you the best of the returns. You know, it's all karma. You sow the seed, so shall you reap. So, बहुत पुरानी कहावत है, बस उस पे अमल करना बहुत जरूरी है. Then you come back, you realize that I need to work, I need to work, I'm in the office, I need to work, I need to complete my task. And then you start, you come back to your workstation, you start working on the activities and all that stuff which is related to work. You stick to your workstation, then you realize that, no, I'm now feeling hungry. अब मुझे भूख लग रही है, so I need to take a lunch break. अब मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना खाने जाना है. Then you take a break of 45 minutes. Is it really required? I mean, I'm not sure about that. It depends on person to person. The objective is to eat your food and complete your food within time, and don't get into unnecessary talks. But then still, I've given like 45 minutes over here as a buffer time. And after that, you come back again, you work on the reports. You have to send the daily report to your manager and all things you have done. You are connected with the audience, with the clients, with the customers, with the colleagues, with the other departments. वो सब कर लिया आपने, and then you go back home. Time यहाँ जा रहा है, but then till the time you don't make a note of it, you would not realize that where are you spending your time. But the story doesn't end here, ladies and gentlemen. You need to understand what is the importance of each task. आपने जो सुबह मेल्स चेक करी, उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, हाई या लो, उससे पता लगेगा कि आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो या टाइम वेस्ट कर रहे हो. टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो या टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना भी और दूसरों का भी. इसी तरीके से आप अपने दिनचर्या का एक शेड्यूल बना सकते हो. यू कैन चेक एज टू वेयर इज योर टाइम गोइंग. यू नीड टू रियली चेक दैट. Now, I'm sure in case you have questions, you can keep sharing those questions with us, because that's the time, when we are heading towards the end of the session now. It's really important. See, there's a plenty we can discuss, but the point is that there are people who listen to everything. There are very few people who understand something, and there are rare people who will implement what they have learned and understood. So implementation is the key. If you won't create a time activity sheet, if you will not make any to-do list for tomorrow, then the story ends here. People who have joined in the seminar, they are no different from those people who have not joined this session, who've been roaming here and there, right? So now there's another category which is there, which is people who think that how to prioritize. अब ये सारा to-do list बना ली, time activity sheet बना ली, but कभी-कभी we have loads of work and I'm not able to figure out that which work should I do first, which work should I do later on. I'm not able to figure that out, and I'm stuck right now. See, when you write 10 things on a to-do list, that doesn't mean that you have done, you have completed it. नहीं, ऐसा नहीं होता. You really have to classify that, categorize that. वो कैसे categorize करेंगे? वो होता है एक 4D model. 4D model. और ये 4D model क्या है? Which was introduced by Mr. Stephen Covey. बड़े अच्छे लेखक हैं, बहुत बुक्स भी लिखी हैं उन्होंने, जैसे कि 7 Habits of Successful People. बड़े अच्छा है, उन्होंने ये एक समाधान निकाला. जैसे मैंने बताया था, कुछ लोग प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं और कुछ लोग सॉल्यूशंस पे फोकस करते हैं. तो मिस्टर स्टीवन कवी ने एक सॉल्यूशन निकाला है, वो ये है 4D मॉडल. Do, delegate, delay, dump. 4D. Do, delegate, delay, dump. और ये इसी तरीके से बनता है. इसमें कोई you cannot change this diagram. You cannot move delegate to top right corner or the bottom right corner. No, you cannot interchange these
grids of this matrix stays as it is. Now, what does this mean? This means कि कुछ कार्य होते हैं जो अर्जेंट होते हैं और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो नॉन अर्जेंट होते हैं. हमें पता होना चाहिए कि कौन सा नॉन अर्जेंट है. We'll give you some examples also. और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं और जो अनइम्पॉर्टेंट होते हैं. अब जो कार्य इंपॉर्टेंट और अर्जेंट है वो उसी समय करना है, उसको आप डू कैटेगरी में डालेंगे. उस बॉक्स में जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आप देख रहे हैं, डू बॉक्स में लिखेंगे कि ये मुझे करना है. फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रेनिंग दे, मैं अभी ट्रेनिंग दे रहा हूं तो मैं ट्रेनिंग ही दे रहा हूं. I can never do anything else because that is the most urgent and the most important thing as of right now. That will fall in do category. Then comes delegate. For example, if somebody calls me up and it's very, very essential call, extremely important call, what will I do? I cannot take that call right now, but it has to be, it is urgent, but it is not important for me as of now. So I can hand over my phone to somebody else who's sitting next to me, my colleague, and I can tell them, please speak to this client. Right? I can do that. Now, non-urgent, जो मैं delay कर सकता हूँ. Delay is something that can be done, which is urgent नहीं. It cannot be done right now. I can delay that. For example, a haircut. I need to get a haircut. I can get it done later on after the office. Why I have to leave the office in between and go? I can do it later on. And then comes dump. For example, if I keep getting some Facebook updates, some WhatsApp updates right now, if I'm getting some notifications, I need to dump that right now because these are the distractions. कभी-कभी क्या होता है, हमें important काम करना है, but we start doing something else which is not urgent and not important. And that's where we falter. That's where we falter. जो हमें बहुत जरूरी काम है उसको हम सबसे end में करने लग जाते हैं, और जो सबसे any work which is not related to my office, to my growth, to the values of the organization, I either ignore that or I just dump it. That should be on the priority. So ये तीन चीजें ध्यान में बहुत रखने वाली जरूरत है कि क्या मैं वो पर्सन हूँ जो ये बोलता हूँ कि I know what I need to do in the day. I know that, but I don't create a to-do list. Second, जिसको ये पता होता है कि मुझे करना है लेकिन उसको पता ही नहीं लगता कि टाइम कहाँ गया. Where did the entire day go? I have no idea. So make a time activity sheet. And third, if you are a sorted person who has a to-do list, but you don't know which work needs to be prioritized, for you, that is the 4D model. So these were the 3 tools that we have discussed with you. If you will apply it, then only you will see the efficiency or the effectiveness of these tools. Knowing is nothing. Listening is nothing. Understanding is something, but doing what you have listened and understood is everything. Please remember that. So, ladies and gentlemen, that brings us to the first session. But before we leave, let's do a quick recap of, with 1 minute maybe, what all we have understood in today's day. And then I'll hand over the voice to Mr. Ankit Singh. So in today's session, we have understood that you need to be aware of your role and goal. Who are you? And you need to ensure that you have the access to the relevant information, the RPR, resources, people, and the requirements. And deal with appropriate people. You should know that you have to sometimes deal with every department. And then moving on to, we talked about delivering tasks on time as per the guidelines, where we talked about the 5 pillars of office management, which is sort, set in order, shine, standardize, and sustain. And last but not the least, we talked about 3 tools of time management, which is your to-do list, your time activity sheet, and the third one is the 4D model. In case you have any questions, I'm sure you would have taken up or commented a lot of questions of yours. Over to you, Ankit. Thanks, Rohit. Thanks. Many thanks for this encouraging and the interesting session we had. For last 45 minutes, as you mentioned, I didn't got a chance to say how the time has passed. So I didn't realize how my 40 minutes, 45 minutes of the presentation has gone. So we have very interesting questions around the Facebook, and we had a lot of viewership on this. Sure. So meanwhile, we did organize 2 poll questions based on topics and the sessions. So one was, the question was how you are prepared, however you have prepared a to-do list. So what our audience have voted, so more than 200 participants have voted for this. Oh, and okay. 57% of them says they always prepare a to-do list for every task they do. 39% of them have responded like they prepare it sometimes. Sometimes. 4% of the people, they say they have never done it. So
That's interesting. So my advice to them that it's always good to prepare a to-do list. Yes, of course. The It second is. question that we rolled out was, have you ever faced work and time related challenges Hmm. during the work that you do in your organization? So Right. amazing response there as well. 180 plus people participated. 37 180 plus. have said that always face some challenge. Hmm. And 56% mentions that they face sometimes. So challenge is there sometime in their work, and 7% do it without facing any challenge. All So this right. is the result from the polls that was quite interesting. So we have a Interesting. set of quick questions from the audience. Right. So Sunil Gautam, who is one of the audience in our Facebook, and have asked how a senior should behave or handle their employees in an organization or in a work culture. So that's a question that has been roaming around in the Facebook comments. So we thought of picking it up to All you. right. Could you rephrase that question once again? Yeah. So how should a senior treat an employee? So suppose a senior is there, how should they treat their subordinates or their employees in a work environment? Right. That's the question. Well, okay. Well, if you are a senior, Mr. Sunil Gautam, then that is, I think, a valid question. If you are an employee and you're reporting to your manager, I think that's more like an expectation. But I'll try to answer that question. It's a very interesting question. In simple one word, treat your people the way you want to be treated. Treat Absolutely. others the way you want to be treated. Treat them with respect, with fairness, with integrity, with um, make sure that these are your partners and not just mere employees. So treat them with respect. That's my answer. So another question that was shared with us, Rohit, can we share our personal problem at our workplace with managers? Uh, okay. Well, that's another interesting question. For that matter, who doesn't have problems in life? One clear and one easy or simple way is to keep your personal things away from your professional life. Don't mix it up. Yes, you can share your problems with your managers only if those problems are hampering your work, are acting as a roadblock, as a barrier in your work. If it's affecting your performance, then you should definitely share, but not every day, right? So refrain unless it's urgent. Thanks, Rohit, for that response. Another questions we have, like how we manage our work-life balance in this difficult time, and that is one of the key question that was asked by many of the people. Right. So I would like to answer and get a response from you on this. Interesting. Again, all questions are superb. Um, I think work-life balance, when somebody asks, it's a vast question. It's a universe in itself. It's very, it would not be, it's not very simple to explain that. But when managing work and life balance or maintaining that, one we have already discussed, do not mix it up. Don't bring your office problems to home. Don't take your home problems to your office, number one. Number two is, if you really want to maintain the work-life balance, make sure that the tools that we've discussed today, you apply that. You start creating a to-do list. You start creating an activity sheet, time activity sheet as to where is your time going. ऐसा तो नहीं है that you need to spend time with your family, but you are still stuck up with your Facebook and your Instagram and just scrolling through, and your children at home, they're just looking up to you that when will you take our time for us. So you need to just make sure that you utilize and leverage the tools that we've discussed. It's going to really help you in your life, in your future. Thanks, Rohit, for that Sure. as comment. Another question from Aman that the participant have. Sure. How to handle a difficult client when we are going for a meeting or kind of engagement with them? So how to can you share some of the points that we can focus while we are going to meet a client and that seem to be difficult to us? Right. So I'll tell you, there meeting a client, again, it's a very vast thing. We don't know the purpose of the meeting. Why are we reaching out to the client? What is the need? But in generic terms,
I would give you two techniques. One technique is the 4P approach, which is plan your discussion. What are the pointers you're going to take? Prepare the information, prepare the entire, all the ingredients, prepare those ingredients that this is the topic that you're going to talk about. And what are you going to talk about? That's the preparation. And practice on it. Practice on it. And then the fourth P is the outcome of that. That is the performance. So follow this 4P approach. Plan your discussion, prepare your discussion, practice your discussion. Second, when you are in the meeting with the client, follow another approach, which is called the AIDA approach, AIDA, wherein A stands for the way you talk. It should be, you should be able to catch the attention of the listener. So it should be catchy. You should sound catchy. It should be attentive. The person should pay attention to you. So A stands for attention. I stands for whatever you're discussing, it should be interesting. It should be in favor of that client. The D stands over here is help the client take a decision. If your talk is really, really interesting, if your discussion is interesting, it can definitely help the client to take a decision, to listen to you and take an action on it. That is the fourth point. Help the client take an action on it. So follow this AIDA approach when you're sitting in front of the client, but that is only possible when you do the 4P approach. When you follow the 4P approach, plan, prepare, and practice and perform. Yes. Thanks, Rohit. Another interesting question. So with that opacity of the time, we'll keep that quiet. But another question, interesting question from Bhavana. Like Sure. Sometimes everything seems urgent, as your senior authority has assigned you the work. As you can't ask them directly how to decide the priority in that case. Mhm. Your advice on that? How to Okay. decide the priority? Everything seems to be a priority. Yes. Okay, that's very good. But then at the end of the day, nobody is a master of everything. Just on a lighter note, if you're in the office and you're working on something, and if you're a married man, the person who has asked this, and your wife is calling, definitely you've got to leave everything and take that call and speak to your wife, because she means everything to you. But jokes apart, what is more important is you need to sometimes sit with your people, with your manager. And if you're doing it for the first time, you need to sit with your manager, with your reporting manager, with your line manager, and tell them these are the 10 reports that I have to prepare. But I need to understand the priority of each and every task that you have assigned to me. Sometimes what happens, the manager says that I need this in 2 minutes. Sometimes he says that you need to do this by the end of the day. So you always get a hint from there that I need to do this in 2 minutes. I need to do this by the end of the day. So you can do that. But in case you have any questions, any doubts, communication is the key. Reach out to your reporting manager and tell them that this is what I have drafted. This is I've created the 4D model. Please help me figure this out. Can I delegate this thing to somebody else so that both the things can be done? If this is urgent and you need it in 2 hours, I can work on one report and my colleague can work on the other. So ask the expert. We discussed this today. Yes. Absolutely, it will work, Rohit. Yes. So last question before we move on to the next slide and, Sure. and context for the tomorrow's session. So Yes. participants will be really excited and they will join and they will share the session with their friends also. Right. So moving to the next question and the final question for the day. Few of the questions are related to how we can be self-motivated. So can you throw some light on that as well? How we can be a self-initiator to a work while we are going to an organization, and Right. how we can be self-motivated. Self-motivated, yes. Of course, we, most of us came alone to this earth, and possibly will be going alone, going back. So yeah, this journey has to be completed alone. So you have to be self-motivated. I really love that word and that question, whoever has asked. You need to be self-motivated. But then for that self-motivation, you really need to understand, answer one simple question, why you're doing something. Why? Why is the engine of that train? So life is like a train. And why is the engine of that train that will pull you quickly towards your destination? When you're connecting with an organization, when you're joining an organization, make sure why you are joining it. You're encashing a check. You got a check of your education, you're encashing. You want to encash that check in the finest of the financial institutions, isn't it?
Similarly, you want to encash your studies that you have earned, your knowledge and skills, you want to encash that in an organization. But why? Is it going to help the organization? Is it going to help the people associated with the organization? So think big, think big. If you want to be self-motivated, you need to clearly define that why you are doing something. Like I'm sitting over here, why Ankit is right now asking a question. We have a clear why we are sitting over here, not for us, but for all of you, for all the audiences who have joined in today. So that will definitely help you. Your why has to be clear and strong. Sure, Rohit. Thanks for answering all the questions. Sure. So moving towards the end of the session, for Right. all the participants, we will be meeting tomorrow at the same time, 3 p.m. Right. 27th of May, and there will be a new topic, work effectively with colleagues. So Rohit will be taking the session again, and he will be our master class, master trainer for this session, like he was amazing today. Thanks, Rohit. Any last Thank word to you. the audience before we? Yeah, just make sure that you implement the learning that we have shared today, and you have only today's day to implement this. There is no tomorrow. Secondly, tomorrow's session is going to be extremely critical, because that's where, this is we will be at the core of the discussion. So don't miss tomorrow's session. You will come to know what kind of employees are there in the organization and how to deal with them. Today, we have understood how can we manage ourselves and how can we manage the time. Tomorrow, we want to see what kind of people are there and how we need to meet with them, deal with them, or stay away from them. That's also equally important. So we are really excited for tomorrow's session. We really urge all of you, please make sure that you join in tomorrow as well, and bring all your friends and colleagues also. And hopefully we'll be able to have another informative, interesting, and interactive session. Definitely, Rohit. Thanks to all the participants for joining. Thank you very much. Stay safe, stay home. Right. Thank Stay you. safe, everyone. Thank you very much for your precious time. Thank Take you. care of yourself.